Welcome back, friends, in my YouTube channel. So, I'm coming with the second module of organization behavior. So, in this particular module, I will cover up determinants of individual behavior, under which we have to discuss the topic personality concept, determinants, perception concept, perceptual process, learning concept, and process of learning. So, these all three topics we will cover in the particular module. So let's start with the topic personality. The first topic is personality. You can see the picture of three faces. ठीक है, यहाँ पे तीन फेस का पिक्चर है. आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हो, फोटो में देख सकते हो कि जो फेस है इज अ स्माइली फेस, and the second phase is the no expression phase, and the third phase is the sad version. So this represents your personality. So personality is all about what makes you the way you are. आप जैसे हो, जो हो, वो आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करती है, जो आपके बारे में बताती है. इट्स अ यूनिक एडजस्टमेंट विद इन द इन्वॉल्व. ठीक है, यूनिक एडजस्टमेंट विद इन द inside and outside the your represent. It is the way through which you are representing yourself is a personality. So, uh, Greek word persona, which means to speak through, जो आपके बारे में बताता है. तो पर्सनालिटी क्या हो गया? एक कॉम्बिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटीज है, दैट फॉर्म्स अ पर्सन यूनिक आइडेंटिटी. तो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी क्वालिटी जो आपके बारे में बतलाती है, इट सिग्निफाइज द रोल विच अ पर्सन प्ले इन द पब्लिक. Every individual has a unique personal and major determinants of his behavior that define his or her personality. So you can see the definition of personality according to Gordon Allport, the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment. So, personality is how people affect others and how they understand and view themselves, as well as their pattern of inner and outer measurable traits and the person's situation and interaction. अकॉर्डिंग टू फ्रेड लुथान. तो पर्सनैलिटी क्या है, ये कैसे हम लोगों से को समझते हैं, एंड वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट आवरसेल्फ. सो इट इज अ इनर एंड आउटर मेजरेबल ट्रेट. तो आपका इनर और आउटर मेजरेबल ट्रेट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो रिप्रेजेंट करता है आपको सिचुएशन में. ओके, so this is all about the definition of personality. Hope you understand the definition. So that in conclusion, you can say personality can be defined as those inner psychological characteristics that both determine and reflect how a person responds to the environment. So this is all about the definition of personality. So the next topic in personality is the determinants of personality. Determinants का मतलब क्या हुआ? It's a factor, the element through which a personality of the individual is going to be shape up. एक individual की personality कैसे built up होती है? धीरे धीरे, slowly the personality is going to be shape up in the individual. So the first factor is the biological factor, the second one is the cultural factor, the third one is the family factor, the fourth one is the social factor, and the fifth one is the situational factor. So these all are the five factors which represent and which help to build the personality of the individual. Okay, so let's discuss one by one to all the topics. So biological factor. बायोलॉजिकल क्या हो गया? बायोलॉजिकल दैट कंट्रीब्यूशन टू पर्सनालिटी में भी स्टडी नंबर थ्री हेड. तो बायोलॉजिकल में भी हमारा तीन हेड आता है. ठीक है, थ्री एलिमेंट है जो एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को बिल्टअप करने में हेल्प करती है. तो बायोलॉजिकल इज द फर्स्ट डिटर्मिनेंट. व्हाई इट इज द फर्स्ट डिटर्मिनेंट? क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल का पर्सनालिटी सबसे पहले मैटर करता है उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के थ्रू. So biologically, heredity is the first component. So human behavior कहीं ना कहीं affect होता है heredity से. So our personality comes from the qualities and the characteristics of the individual comes from the one generation to the generation. We are saying ना, like father, like son, like mother, like daughter. तो मैं अपने पापा की कार्बन कॉपी. Why we are saying like that? Saying these things because our personality first affects through the heredity. Okay.
The second one is the brain. The second most important component is the brain, biological approach that concentrate. तो हमारी जो ब्रेन का भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को बिल्टअप होने में. आपके पेरेंट्स का ब्रेन जिस तरह से उस तरह से आपका ब्रेन डेवलप होगा. ओके. द थर्ड एलिमेंट इज अ फिजिकल फैक्टर. Again a physical factor which play a vital ingredients of the personality. सबसे important term. ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना personality, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि outside वो कैसा दिखता है. He is a very handsome, he is a very good, he is looking, he is a tall, he is a short. We are saying, we are generally using these terms for the personality, but personalities are not only the outer physics पर्सनालिटी. ठीक है. सो फिजिकल फीचर जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारा हमारे पेरेंट्स से आता है. सो बायोलॉजिकल फैक्टर का उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल है आपकी पर्सनालिटी को बिल्टअप होना है. आप टॉल हैं, शॉर्ट हैं, आप फेयर हैं, डार्क हैं. सो दिस ऑल आर द टर्म्स विच हेल्प टू बिल्ट अप योर फिजिकल फीचर्स. फिजिकल फीचर्स कहाँ से आया? आपके पेरेंट्स से, आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से आया. Okay, so this is the biological factor, how through that the personality is going to be shaped. The second determinant of the second element is a cultural factor. Yes, exactly. Culture होता क्या? Culture is a learned belief. ठीक है, वैल्यूज एंड कस्टम विच वी आर फॉलोइंग. कल्चर क्या हो गया? हमारा वैल्यूज एंड कस्टम. हम जहाँ रहते हैं, जैसे रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, हमारा कल्चर वैसे ही बिल्टअप हो जाता है. इफ वी आर इंडियन, आवर कल्चर इज टू टच द फीट ऑफ द एल्डर पीपल. ठीक है, हम अपने से बड़ों को पैर छूते हैं. बट एट द सेम टाइम इफ यू आर लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री, देयर कल्चर इज टू शेक द हैंड. ठीक है, वो लोग हाथ मिलाते हैं. सो इट इज देयर कल्चर. सो हमारा वैल्यू एंड कस्टम उसको हम फॉलो करते हैं. तो एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को बिल्टअप होने में कहीं ना कहीं कल्चर का भी एक बहुत बड़ा रोल है. ठीक है, आप कहाँ रहते हो, कैसे आपका क्या आपके कल्चर का वैल्यू है, नॉर्म्स है विच यू हैव टू फॉलो. ओके. So definitely if you we can talk about the festival like Makar Sankranti. Makar Sankranti is the festival which we Bihari and Jharkhandi people are celebrating like a Dahi Chuda. But at the same festival has been celebrated in a Punjab as a Lohri and in a South as a Pongal. So this is their cultural factors, cultural values and beliefs जिसके थ्रू लोग अपने आप को, अपने पर्सनालिटी को बिल्टअप करते हैं. The next is a family factor again, which is a very important factor. Family. जहाँ हम पढ़ते बढ़ते हैं, तो हर किसी के फैमिली का अपना एक नॉर्म्स होता है, वैल्यूज होता है. ठीक है, हर किसी की फैमिली का अपना एक रहने का तरीका. यू कैन से कि वो लोग कैसे चीजों को लेते हैं, समझते हैं. तो ओवरऑल होम इन्वायरमेंट, हम कह सकते हैं कि हमारे घर का इन्वायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी पर्सनालिटी को बिल्टअप होने में. एक छोटा बच्चा जो अपने घर में देखता है, जो अपने पेरेंट्स को देखता है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, तो वही चीजें वो सीखता है और उसकी पर्सनालिटी में वो कहीं ना कहीं बिल्टअप हो जाती है. तो अगर हमारे फैमिली में रूल्स है, कुछ वैल्यूज है, नॉर्म्स है कि विच द एवरीबडी शुड डू देयर ओन टास्क. अपना काम करो, खुद से करो, हेल्प योर पेरेंट्स, हेल्प योर मदर एंड कीप द थिंग्स ऑन अ प्रॉपर प्लेस. दीज काइंड्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड यू कैन से नॉर्म्स आर फॉलोड बाय अ फैमिली. बच्चा ऑटोमेटिक वही चीज सीख लेगा और वही चीजें वो अपनी पर्सनालिटी में इनबिल्ट कर लेगा. ओके. So this is the family factor, which is a very important factor for build up the shape of the build the personality of the individual. Next one is a social factor. Social factor, society where we are living. As we know that we are the social animal, we can't live alone. We need a people to interact. We need a people to शेयर आवर थॉट्स फीलिंग्स. तो हम लोगों को लोग चाहिए जहाँ हम अपना थॉट फीलिंग को शेयर कर सकें. तो सोशलाइजेशन जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? इनिशियल कॉन्टेक्ट बिटवीन अ मदर एंड हर न्यू इन्फेंट. सोशलाइजेशन प्रोसेस सबसे पहले स्टार्ट होता है एक बच्चे का अपनी माँ के तरफ. उसके बाद घर के बाकी मेंबर, फैमिली हो गया, फादर हो गया, ब्रदर सिस्टर हो गया, रिलेटिव फ्रेंड्स. आफ्टर दैट ही और शी विल गो टू द स्कूल जहाँ उसके फ्रेंड्स मिलेंगे, फिर कॉलेज जाएगा. तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, आप किस सोसाइटी में रहते हो, कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, वहाँ का जो नॉर्म्स है, वैल्यूज है विच यू हैव टू फॉलो. सपोज
if you are in a India, so इंडिया में आप अपना सोसाइटी है, तो आप वहाँ के सोसाइटल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बिहेव करोगे। व्हेन फॉरेन जाओगे तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग बिहेव करोगे। सोशलाइजेशन मे बी वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई एम्प्लॉय बिहेव द वे दैट डू इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। तो किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन, इफ द ऑर्गेनाइजेशन मेक फील एम्प्लॉय टू बी द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय, तो सोशल सोसाइटी का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को बिल्टअप होने में। नेक्स्ट हमारा है सिचुएशनल फैक्टर। So situational factor is again a very important. The effect of the environment is quite strong. Knowledge, skill, and language are obviously acquired and represent important modification of behavior. So, for example, हम कह सकते हैं कि आप जैसे घर पे हो जरूरी नहीं हो कि बाहर भी आप वैसे ही हो। घर में आप कुछ और हो, बाहर आप कुछ और हो। उसी तरह से आप हाउ यू आर बिहेविंग विथ योर बॉस इन द योर कंपनी, इनसाइड द कंपनी, कंपनी के अंदर आप बॉस के साथ कैसा बिहेव करो, एट द सेम टाइम व्हेन यू आर डूइंग अ पार्टी or doing entertainment with the same boss, you are behaving differently outside। तो सिचुएशन पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट, सिचुएशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को शेप अप होने में। So we have discussed a lot about the determinants. So we have discussed a 5 important factor, which is a biological factor, culture factor, family factor, then social factor, and the situational factor, which all are very important for build up the personality of the individual. Okay, hope so clear to all of you this topic. The next topic we are going to start is 1 minute. The next topic is a perception. You can see the picture, take a perception. So there are two people. One people is saying it is a 6 and the another people is saying 9. Both are right. ठीक है, दोनों ही अपने अपने जगह पे राइट है। तो एक के साइड से वो 6 दिख रहा है, एक के साइड से 9 दिख रहा है, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है। इट में भी 6 और इट में भी 9। तो परसेप्शन क्या हुआ, आपका नजरिया होता है, आप चीजों को किस तरह से देख रहे हो, हाउ यू आर ऑब्टेनिंग द थिंग। So how you are observing, how you are understanding the situation. There is the same situation, but two different people or the different people will understand, make understand the same situation differently. Okay. So the perception क्या हुआ, एक नजरिया हो गया। ये कहाँ से आया, लैटिन वर्ड से आया, परसिप्यो। तो इसका मतलब होता है रिसीविंग, कलेक्टिंग, एक्शन ऑफ टेकिंग पोसेशन, एप्रीहेंशन विद द माइंड और सेंस। ठीक है, रिसीव करना, कलेक्ट करना, एक्शन लेना, एप्रीहेंशन विद द माइंड और सेंस। परसेप्शन इंक्लूड्स द 5 senses, which is the touch, sight, sound, smell, and taste. It also includes what is known as a perceptions, a set of sense involving the ability to detect change in body position and movement. It also involves the cognitive process required to process information such as recognizing the face,
of a friend or a detecting a familiar sense. तो perception बनाने के लिए हमारे पास 5 sense है. We have a 5 sense through which we are going to create a perception. ठीक है, perception ऐसे तो नहीं बनेगा, नजरिया तो ऐसे नहीं बनेगा. हमारे पास 5 सेंस है ना, टच कर सकते हैं, साइट कर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं. So these are the 5 senses to which we are going to create a perception of the individual. Okay. बोलते हैं ना कि देख करके बोलते हैं ये मेरा फैमिली है, ये मेरा फ्रेंड है. तो वी आर डिटेक्टिंग अ फेमिलियर सेंस. ठीक है, स्मेल करके बता सकते हैं कि ये मेरे फैमिली फैमिली मेंबर है. So these are the 5 senses. Next is a concept. Concept क्या है? So perception is a very important for life of an organization. So many problems of the organization and that of its members may be traced to the distortion in the perception. So perception का मतलब वो ability to perceive, that is understanding or knowledge, mental grasp quality by means of sensor or awareness. तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि परसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सेलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, रिट्राइव करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं किसको? इंफॉर्मेशन को. सो परसेप्शन इज द वर्ड थ्रू विच वी आर सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, रिट्राइव एंड रिस्पॉन्ड टू द इंफॉर्मेशन. सो परसेप्शन डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हर एक इंसान का परसेप्शन अलग अलग हो सकता है. सो ईच इंडिविजुअल परसीव द सेम सिचुएशन डिफरेंटली. हर एक इंडिविजुअल एक ही सिचुएशन है लेकिन उसको डिफरेंटली परसीव करेगा. ओके. So the next topic in this particular module is the definition. आप देख सकते हो रेस्पी रॉबिन्स के थ्रू perception may be defined as a means by which people organize and understand their sensory impression to give meaning to their surroundings. तो perception क्या है? ये जहाँ लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, समझते हैं चीजों को अपने सेंसरी इंप्रेशन, टच, साइट, स्मेल, फील से to give meaning to the surroundings. According to Joseph Reich, perception includes all those processes by which an individual receives information about his environment, seeing, hearing, feeling, tasting, and smelling. नेक्स्ट इज अ परसेप्चुअल प्रोसेस. परसेप्चुअल प्रोसेस क्या है? परसेप्चुअल प्रोसेस का मतलब होता है कि ये जो सारा कंप्लीट प्रोसेस है ना, हम किसी चीज के लिए इंटरप्रिटेशन रखते हैं, बात बनाते हैं. ठीक है, वी आर ऑब्जर्विंग द थिंग. तो हाउ वी आर गिविंग इंटरप्रिटेशन फॉर द पर्टिकुलर थिंग. So this is the process. The process of perception passes through the following stage. कुछ स्टेज हैं जिसके थ्रू परसेप्शन का प्रोसेस फॉलो करता है. So let's discuss the process. So we have this process. We have a different step through which we are moving towards towards creating a perception. So सबसे first point है आपका characteristics of stimuli और input. तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हम परसेप्शन कैसे बनाते हैं? किसी इनपुट का बनाएंगे ना. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनपुट का भी एक बहुत बड़ा रोल है. ठीक है, कि हम उसके परसेप्शन को कैसे क्रिएट करते हैं. तो परसेप्चुअल इनपुट में क्या क्या आ जाएगा? हम किस किस चीज का परसेप्शन बना सकते हैं? ऑब्जेक्टिव का, इवेंट का और पीपल का. तो हमारे पास 3 इनपुट है, ऑब्जेक्टिव है, इवेंट है और पीपल है. उसके अगेंस्ट हम परसेप्शन क्रिएट करेंगे. सो वी हैव अ परसेप्चुअल मैकेनिज्म इन सेकेंड स्टेप, जहाँ हम क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं. तो सेलेक्ट करना, हम किस चीज का परसेप्शन बना रहे हैं, फॉर विच वी आर आई एम गोइंग टू जनरेट फ्रॉम परसेप्शन. तो ऑब्जेक्ट है, इवेंट है या पीपल है. फॉर एग्जाम्पल, मैं भीड़ में जा रही हूँ, मैंने देखा कि रोड पे एक गाड़ी चल रही है. एक गाड़ी चल रही है व्हाइट कलर की होंडा सिटी गाड़ी जो जा रही है. मैंने उसे देखा एंड तुरंत उसको वो चीजें मेरे दिमाग में आई. भीड़ में तो हजारों गाड़ी चल रही है, बट मैंने उसी के लिए क्यों परसेप्शन बनाया? नाउ आई हैव टेकन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टू क्रिएट अ परसेप्शन अगेंस्ट दैट. अब मैं उसको अपने माइंड में ऑर्गेनाइज करूंगी कि ये गाड़ी मैंने कहाँ देखा था, क्या था, नहीं था. आफ्टर दैट आई विल गिव अ इंटरप्रिटेशन. मैं उसके बारे में रिजल्ट दूंगी कि ओ ओके ओके, दिस सेम मॉडल, सेम कलर गाड़ी और व्हीकल इज ऑफ माई रिलेटिव. ठीक है, मेरे किसी रिलेटिव का सेम कलर, सेम मॉडल का गाड़ी है. सो आफ्टर दैट आई विल गिव अ परसेप्चुअल आउटपुट. अब मैं उस इनपुट का आउटपुट दूंगी विच इज कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ एटीट्यूड, ओपिनियन, फीलिंग एंड वैल्यूज. जो आपके एटीट्यूड, ओपिनियन, फीलिंग एंड वैल्यूज के थ्रू आप उसको जनरेट करोगे. लाइक इंटरप्रिटेशन में मैंने दिया, ओपिनियन मैंने दिया कि वो मेरे फ्रेंड के पास भी सेम कलर का, सेम मॉडल का, डिजाइन का गाड़ी है. सो दिस इज द परसेप्चुअल आउटपुट.
ओके एंड अकॉर्डिंग टू परसेप्चुअल आउटपुट आई विल बिहेव लाइक दैट, मैं अपने बिहेवियर को इसी तरह से शो करूंगी। तो नीचे में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीवर। तो परसेप्शुअल मैकेनिज्म को बनाने में या परसेप्चुअल आउटपुट को बनाने में परसीवर का कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर परसीवर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव परसेप्शन जनरेट करेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस परसेप्शन को क्रिएट करने में। उसके बाद आपका फाइनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिचुएशन भी जनरेट होता है कि किस तरह का सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग यू आर गोइंग टू क्रिएट द perception. So this is all about the complete, you can say, steps of perceptual process, which is a very important topic for your exam point of view. तो आप इसको देख सकते हो, आई हैव गिवन इन माय पीपीटी, दिस इज द कंप्लीट नोट्स आपके पास है, आप देख सकते हो टॉपिक को। यू कैन फॉलो माय ब्लॉग आल्सो। परसेप्शन मैकेनिज्म है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई है, परसेप्चुअल आउटपुट है, एंड दिस वाज द कंप्लीट नोट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज अ लर्निंग। अगर हम लर्निंग की बात करें तो नाउ विल स्टार्ट विद द लर्निंग। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग क्या मतलब? सीखना। हम बोलते हैं ना हिंदी में कि हम सीख रहे हैं, सीखना इज अ लर्निंग। सो लर्निंग को हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम चीजें सीख करके वो परमानेंटली उसको अडॉप्ट करते हैं और अपने बिहेवियर में चेंज करते हैं। तो लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज अ परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ड्यू टू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। लर्निंग क्या हुआ? एक परमानेंट चेंज है किस चीज में? आपके बिहेवियर में, या तो डायरेक्ट और या इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। इसका मतलब हुआ कि इट मीन्स चेंज इन बिहेवियर एटीट्यूड ड्यू टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। तो मतलब हुआ कि आपका आप नई चीजें को सीखते हो, चाहे आप एजुकेशन लेके सीखो, ट्रेनिंग करके, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में हो या थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस हो, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। So learning is not a single time process, it is a continuous process. हमको हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। So सीखना is a learning, जिसको सीखने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे बिहेवियर में उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। So after learning the things, we are incorporating that particular thing in our behavior. It is a modification of behavior, हमारा behavior जो है ना modify करता है। So it is a completed by acquisition of knowledge and skill which are relatively permanent. तो ये कंप्लीटली कहीं ना कहीं एक्विजिशन है किस चीज का? नॉलेज एंड स्किल का, जो परमानेंटली है, रिलेटिवली परमानेंट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ यू आर गोइंग टू लर्न ड्राइविंग, ठीक है, ड्राइविंग सीख रहे हो, तो क्या वो सीखने के बाद भूलोगे? नो ना। सो आफ्टर लर्निंग अ ड्राइविंग, दैट विल परमानेंटली अडॉप्ट इन योर बिहेवियर। ठीक है, आप सीख लिए एक बार गाड़ी चलाना तो आप सीख लोगे, आप मॉडिफाई कर लोगे अपने बिहेवियर को। सो देयर आर टू प्राइमरी एलिमेंट्स इन मीनिंग ऑफ लर्निंग। आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो प्राइमरी एलिमेंट है लर्निंग के। लर्निंग, द फर्स्ट वन इज अ चेंज मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट। चेंज, लर्निंग कहता है कि चेंज जो होना चाहिए ना, रिलेटिवली परमानेंट होना चाहिए। दिस मीन्स दैट आफ्टर लर्निंग आवर बिहेवियर मस्ट बी डिफरेंट, ईदर बेटर और वर्स एज कम्पेयर टू आवर बिहेवियर प्रायर टू दिस लर्निंग। सो या तो अच्छा हो जाएगा या तो बुरा हो जाएगा, तो अपनी प्रायर एक्सपीरियंस में। फॉर एग्जाम्पल, यू लर्न टू ड्राइव कार और हैव लर्न हाउ टू यूज अ कंप्यूटर। तो आप क्या कर रहे हो? गाड़ी चलाना सीख रहे हो, एंड हाउ टू यूज कंप्यूटर एक बार आप सीख लिए तो सीख लिए। तो दिस चेंज मस्ट occur ड्यू टू सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। ये जो सारे चेंजेस है ना, ये कहीं ना कहीं आपका कुछ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस रहता है। सो दिस लर्निंग इज नॉट कॉज्ड बाय बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन से लर्निंग है, ये आपने चीजें सीखी तो और कुछ बायोलॉजिकल मैच्योरेशन जो है उसके लिए आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड डज नॉट लर्न हाउ टू वॉक, वो तो बायोलॉजिकल फेनोमेन है ना, ऑटोमेटिक वो चलना सीख जाएगा। तो उसको चलने के लिए सीखना जरूरत नहीं है, बट उसको गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी सीखना जरूरी है। सो वी डू नॉट लर्न टू ईट और इवन इट इज अ बायोलॉजिकल फेनोमेन। हमको खाने और पीने के लिए नहीं सोचना है। वी आर automatically it will come inside the infant. Okay. So here are some definition of the learning you can see. So as per the Stephen P. Robbins, according to Stephen P. Robbins, learning is any relatively permanent change in behavior that occurs as a result of experience. Learning क्या है? एक permanent change है किसमें? Individual के behavior में। So Gales and others said
लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। गिल्स एंड अदर्स बोलते हैं कि लर्निंग क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है, किसके थ्रू, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग। एग्जैक्टली हम चीजों को सीखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता है। Again, we have a Charles A. Skinner. Learning is the process of progressive behavior adoption. Learning क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जब वो प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्शन है, प्रोग्रेस करता है आपके बिहेवियर को, नई नई चीजों को सीखकर उसको अडॉप्ट करके कहीं ना कहीं आप प्रोग्रेस होते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन। नेक्स्ट इज प्रोसेस। This is the process of the learning. In the learning process, we have 10 different states. Learning is a process. मतलब हम कैसे चीजों को सीखते हैं. How we are going to learn. How we are going to modify our behavior. So for this, we have a 10 steps. There is these are the stimuli, then attention, then recognition, then translation, then reinforcement, then behavior, then reward, then habits, then motives, then efforts. So these are the 10 different, you can say 10 different states through which we are going to learn a new thing. So the first one is a stimuli. Stimuli क्या होता है? So stimuli are any object and language which draw the attention of people. So stimuli कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्ट है या लैंग्वेज है जो एक इंडिविजुअल का ध्यान आकर्षित करता है, अटेंशन खींचता है. So employee get stimuli from the action of their superior. एम्प्लॉय जो हैं वो कैसे एक्शन लेते हैं, कैसे एम्प्लॉय स्टिमुलाई उनको मिलता है अपने सुपीरियर के थ्रू. सुपीरियर टेल एंड एडवाइज एम्प्लॉय हु पे अटेंशन टू दिस स्टिमुलाई. ऑल स्टिमुलाई मे नॉट बी फुल्ली अटेंडेड. तो आपके सुपीरियर आपको बताएंगे कि आपको कौन चीज पे ध्यान देना और क्या चीज सीखना है. तो हर एक स्टिमुलाई जो है जरूरी नहीं है कि आप उसको फुल्ली अटेंडेड करो. So your superior is responsible to give you the stimuli that which new training you have to learn. So the second one is the attention. The degree of attention depends upon the nature of the stimuli. जो डिग्री ऑफ अटेंशन होता है ना नेचर, तो उस कहीं ना कहीं स्टिमुलाई पे डिपेंड करता है. ऑल स्टिमुलाई नॉट पेड अटेंशन टू. टेक्निकल एंड इंटरेस्टिंग स्टिमुलाई है हाईली अटेंडेड. डेफिनेटली वी आर इन अ सिचुएशन बट नॉट नेसेसरी कि हम उस चीज को सीख ही रहे हैं. तो हर स्टिमुलाई की तरफ तो ध्यान नहीं जाता ना. कुछ टेक्निकली या तो इंटरेस्टिंग सेशन होगा ना, तो ऑटोमेटिक आपका ध्यान उसकी तरफ चलेगा. तो इंटरेस्टिंग स्टिमुलाई इज ओनली अटेंडेड. ओनली the interesting things the people are going to catch. Okay. The third one is the recognition. Attention paid stimuli are recognized as acceptable factors of improvement and new lifestyle. तो जो स्टिमुलाई जो है ना जिसको अटेंशन मिलेगा उसको रिकॉग्नाइज करेंगे एम्प्लॉय. एंड एम्प्लॉयज पेइंग अटेंशन टू स्टिमुलाई आर रिकॉग्निशन द स्टिमुलाई फॉर लर्निंग पर्पस. The level of recognition depends upon the level of values, preference, needs and desire of the employee. तो किसी भी स्टिमुलाई का जो है रिकॉग्निशन कैसे होगा, वैल्यूज, प्रेफरेंस और डिजायर ऑफ एम्प्लॉयज पे. नेक्स्ट वी हैव अ ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन का क्या मतलब होता है? ट्रांसलेशन और इवैल्यूएशन प्रोसेस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपने चीजों को क्या सीखा, आपने बिहेवियर थ्रू रीइंफोर्समेंट उसको इनकॉर्पोरेट किया कि नहीं. एम्प्लॉयज बिहेव प्रॉपरली थ्रू एटीट्यूड चेंज, objectivity, mental and physical development. It is observed in better performance. So translation and evaluation process play a crucial part. ठीक है. तो मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट के लिए आप उस चीज को सीख रहे हो कि नहीं, फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ट्रांसलेशन मिलता है. नेक्स्ट वी हैव रीइंफोर्समेंट. रीइंफोर्समेंट क्या होगा? तो रिपीटेड एक्शन इन रीइंफोर्समेंट मतलब हम चीज को बार बार सीख रहे हैं ना, बार बार करेंगे तभी तो अच्छे से सीख पाएंगे. सो लर्नर learns as per their perception level. Generally, positive reinforcement is more effective for making permanent change in behavior. तो अगर तुम्हारा रीइंफोर्समेंट जो है ना पॉजिटिव है, जो आप सीखने लायक है ना, उसको आप बार बार करोगे, रिपीटेड एक्शन से करोगे, और जब बार बार करोगे ना तो डेफिनेटली वो आपको आपके बिहेवियर में कहीं ना कहीं मॉडिफाई हो जाएगा और आपके अंदर वो परमानेंट चेंज आ जाएगा. सो रीइंफोर्समेंट मीन्स रिपीटेड एक्शन विच यू आर गोइंग टू टेक, जहाँ हम रिपीटेड एक्शन लेते हैं और उस चीज को बराबर सीखना चाहते हैं, विच इज अ पॉजिटिव. Okay. The next step is a behavior. Once you learn a thing, once you
did learning after doing a reinforcement again and again, it makes a permanent change in your behavior. अब आपके behavior में वो permanently कहीं ना कहीं incorporate हो जाए. So a temporary change in behavior is not learning. टेम्पररी चेंज है ना. आप मैंने ड्राइविंग सीखा, एक दिन चलाया, अगले दिन नहीं चला पा रहा. दैट मीन्स आई एम नॉट एफिशिएंट, आई एम नॉट कंप्लीटली लर्न द थिंग. तो पॉजिटिव बिहेवियर गिव्स रिवॉर्ड टू एम्प्लॉय. अगर पॉजिटिव बिहेवियर है ना, उस चीज को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किया है मैंने, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उनको रिवॉर्ड मिलेगा. इफ आई एम एबल टू लर्न दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जिसको सीखने के बाद हम और एफिशिएंट हो जाएंगे और काम और जल्दी कंप्लीट होगा. So once I learn this that software, and I will incorporate in that particular software in my forte. So and I behave like that. And finally, once you learn a new thing, you will get a reward. So employee expect reward for learning. एम्प्लॉय को क्या चाहिए? रिवॉर्ड चाहिए लर्निंग के लिए. भाई हमने सीखा है, हमको रिवॉर्ड मिलेगा. ऐसे ही तो नहीं करेंगे. फॉर मोटिवेशन आई नीड अ रिवॉर्ड. तो इफ द ट्रांसलेटेड बिहेवियर प्रोवाइड्स अ रिवॉर्ड, अगर आपका ट्रांसलेटेड बिहेवियर जो आपने अपने नई चीजों को सीख के ट्रांसलेट किया अपने बिहेवियर को, पहले आपको वो एक्सवाइजेड सॉफ्टवेयर आपको नहीं आता था, but once you acquire that XYZ software, you are much more efficient. You are now more efficient to do a task. So it is expected, otherwise it is not expected. ठीक है. एम्प्लॉयज डेवलप देयर बिहेवियर इनटू हैबिट्स. आप उस चीज को सीखने के बाद अपने हैबिट में उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे. एंड फाइनली यू आर गोइंग टू गेट अ रिवॉर्ड फॉर दैट टास्क. दैट मे बी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी. इधर आपको स्टेटस रिकग्निशन मिल रहा है, इधर यू आर गोइंग टू गेट अ in term of money. Money के term में आपका promotion, आपका incentive, and in terms of money you can say you are going to get. So this is all about the process of learning.